The world begins with an idea, a single fragile belief that things can be done differently. This is the story of an idea that became a school, that became a legacy. An idea is like a seed. It requires faith to plant it, courage to nurture it, and a community to help it grow. 40 years ago, a seed was planted. It was a belief that education wasn't just about filling a mind with facts, but about igniting a spirit with curiosity, discipline, and compassion. This is a story of the seed planted by Colonel P.S. Satsangi. This is the story of CSKM. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So it's true that he always believed in a different path, and he said that the easy path is not for us and we need to take the difficult path. So it was a very challenging thing to do. कर्नल सत्संगी ने यहाँ करिश्मा किया, और वो करिश्मा करा कि मणिपुर से, नेपाल से, मिजोरम से, कहाँ से बच्चे यहाँ नहीं आए, दूर दराज बिहार से, बिहार के हर स्टेट से बच्चे यहाँ आए। पूरे भारतवर्ष के बच्चे CSKM में पढ़ चुके हैं। He was a legend and he produced remarkable students who passed out under his guidance, and they are all doing very, very well in the world today. Colonel P.S. Satsangi was a great man, a great philosopher. He was full of fire, full of dynamism. I and many others are the living embodiment of what Colonel Satsangi sir was. He had built up that school the way he wanted the students to grow up, and this concept of being busy bee all the time. He believed in self-reliance, and he wanted his students to build that character of self-reliance. His persona, his stature, and the way he dealt with the students, one can only feel. His leadership had a tremendous effect on everyone. If I can summarize, he was a Copernicus of his time, far ahead of his times with his vision, with his thoughts. A concept maker who had a different ideas about school, his ideas of gifted children. When you look back at the school, we had the concepts of Super Syndicate, the BZBs, the Karishmas, the gifted children. I'm very happy to say that Amrit and I were the first gifted children of the school, and we were blessed to have an individual room in the psychology lab, which was very kindly given by us to Shakudi. We learnt to be rough and tough. It is there that I realized that we can be tough. जो हमारे स्कूल का जो एक थीम सॉन्ग है, प्रॉब्लम सॉल्वर्स वी शैल बी एंड नॉट फैसिलिटी एंजॉयर्स, लिविंग एंड वर्किंग रफ एंड टफ, रेडी टू मैनेज बेस्ट एंड वर्स्ट. Whatever I am, I owe it to school. In my class, we had so many laggards from so many different schools. No one made a distinction. And we went in as donkeys and came out as horses. That is something that, whatever the circumstances, we'll sail through and we'll take others along. Right from getting this opportunity to study in this such a prestigious school, से लेकर के the way I have been groomed, the opportunities which I had got. तो बिहार के स्कूल कैसी होनी चाहिए, कुछ हमने व्यवस्था कर्नल सत्संगी स्कूल से जो सीखी थी। इस बार के बिहार विधानसभा में अगर मैनिफेस्टो आएगी तो आप देखिएगा कुछ ऐसी बातें हैं जो कि कर्नल सत्संगी स्कूल से पिक कर कर यहाँ डाला हुआ है। इसीलिए हमने कहा कि माई कंसेप्ट इज यू स्पेयर द रॉड, स्पॉइल द चाइल्ड, बट इफ यू आर कर्नल सत्संगी यू कैन स्पेयर द रॉड एंड स्टिल यू विल नॉट स्पॉइल द चाइल्ड। कर्नल साहब कहा करते थे कि अच्छा टीचर बच्चे की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। वो कभी टीचर से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और अच्छे टीचर की तलाश उनकी कभी खत्म नहीं होती। Working under the guidance of our founder chairman, late Colonel P.S. Satsangi, was one of the greatest blessings of my career. वो काम के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अब खुद 18 घंटे 19 घंटे काम करते थे। वो सुबह जाके 3 बजे 4 बजे भोर में सोते थे, और रात भर वो हर चीज़ के बारे में सोचते रहते थे।
ये हमेशा मेरे को बोलते थे कि आप फाइन आर्ट्स में क्लास पढ़ाइए, लेकिन बच्चों के अंदर जो पोटेंशियल है उसको ज़्यादा डेवलप करने के लिए कोशिश कीजिए। बड़े डिसेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन थे। वो एक भगवान अरे की हम बोलेंगे हमारा नजर में ही पता होता, वो दूरदर्शी थे, वो मालूम है, वो काम करने वाले का कदर करते। He used to give a lot of creativity among the students. He used to talk with the students most of the time. वे हमेशा कहते थे कि बच्चा एक दीप है जिसको प्रज्वलित करने के लिए प्रेम और विश्वास की हवा देते रहना पड़ता है। And Colonel Satsangi was one of the very famous principal of Sainik School also. So his name was well known everywhere in Bihar. Hardly there was any village but educated people did not know about Colonel Satsangi. चेयरमैन सर इतने केयरिंग थे, बहुत एम्प्लॉइज के लिए पूरे को फैमिली मानना। A man who was always ready to support us, guide us. वो साइकोलॉजी को पहचान जाते थे कि अगला क्या बोलना चाह रहा है या क्या बोलेंगे आगे। चेयरमैन साहब का रात में 10 दिन 5 दिन चाहे कभी कंटिन्यू में मेम का उनका सपना देखता हूँ कि मेरे पास खड़े हैं, मुझे आर्डर दे रहे हैं कि ये काम कर लो, ये ऐसे कर दो, वैसे कर दो। आज भी उनका जो तरीका था मेरे साथ, जिस तरह से वो मानते थे। His couplet, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। The foundation was laid 40 years before, not by anyone, but by everyone. But make it very clear, in presence of Colonel P.S. Satsangi. I'm really sorry, I'm taking sir's name, but to be on a 40 years, he has to be named. The legacy is apart. Sorry. मेरे जाने के बाद कोई न घबराए, ये दौर अपनी रफ्तार से चलता रहेगा आगे भी। मैंने संभाला था जब तूने सीखा था चलना, ये कार जहां दराज है बंद न होगा। अब इस शहर को आबाद रखना मेरे बाद, मैं जानता हूं तुम में यह हुनर बखूबी है। About our chairperson, Dr. Shakuntala Satsangi Jaiman. She is a wonderful leader, dedicated, compassionate, and deeply committed to the school's mission. Founder chairman, sir, no doubt initiated and started those thoughts which were inconceivable at that time. But it is our honorable chairperson, ma'am, the then principal at that time, who actually conceptualized and translated all his dreams and all his innovative thoughts into real life situation, into successful learning story. She understands every person. सबसे बड़ी हाँ, she knows everyone. She knows everyone. She knows everyone और हर टीचर की हर पल की खबर होती थी और जरूरत पड़ने पे बहुत सपोर्टिव भी रही है, सुनी है हमारी बातें और बहुत सपोर्टिव भी है, दोनों चीजें। और फिर वो निकालती भी थी सॉल्यूशन उसका। इनिशियली जब मैम बहुत ओवरवेल्म होती थी ना, तो फिर वो यहाँ से ऑफिस से निकलकर हमारे डिपार्टमेंट में आ जाती थी, प्राइमरी में आती थी। फिर मैम वहाँ पे आराम से बैठती थी और गौतम मैम, विश मैम, ये लोग सब मतलब के साथ उनका इंटरेक्शन होता था। सिंपल एक मैसेज टाइप करते, मैम आपसे बात करनी है। उसके बाद मैम अपने आप बुला लेती थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सबका हाल चाल लेना, घर में परिवार वालों के बारे में पूछते रहना, कोई परेशानी तो नहीं है, लॉकडाउन में पूछना, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को। तो कहती है वाइफ हमारी, कहती है आप चेयरमैन साहब से तो नहीं सुधरे, वो तो डांटते डांटते आपको फैलाए, लेकिन प्रिंसिपल मैम ने आपको सुधार दिया 7 months में। She was not just a principal, she was my mentor, my strength, my friend and my inspiration. जैसे कभी कुछ खाने का मन हुआ, गए वहाँ प्रिंसिपल सर के घर के पीछे, दीदी हाँ क्या, तो दीदी कुछ खाने को भूख,
अच्छा इनको ये दे दो, इनको ये दे दो. She was very nice, always like a big elderly sister, ready to help us all the time. शक्कू मैम इज मतलब शी इज केप्ट हर डोर्स ओपन. ऐसा कभी भी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मेरे पास नहीं आ सकते हो, मेरे पास कुछ नहीं कर सकते हो. इनफैक्ट मैंने बोला कि व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू problematic situation in my life, and she was the first one I spoke to, and I told her that this is what is happening, what should I do, and she took care of me. The deep understanding of the nuances of the education, as she has done her PhD from Indian Institute of Delhi, IIT Delhi, through her action research, through her institutional planning, and more importantly, she even blended his educational philosophy and ideology with some of the most modern and the practical thoughts of the day-to-day life. We thought every of our child could achieve, and therefore we put in all our psychological knowledge, methodology, effort to make sure that the potential of every child comes to the fore. So one of the things which at that time which we had in the school, in fact we continue till today, is nil failure in any class, which started much later with CBSE etc. मैम के साथ भी काम करके हमें बहुत खुश थे. एक फैमिली रिलेशन में था कि मैं हमेशा सोचता था कि मैं काम नहीं कर रहा, मैं एक स्कूल का मेरे एक फैमिली एटमॉस्फेयर था जिसमें मैं अपना परिवार के साथ काम कर रहा हूँ. मेरे को कोई टाइम लिमिट नहीं था. जब भी मैं कोई एनुअल डे में काम करता तो 12-1 बजे कोई बात नहीं, घर में काम करें, टाइम पास हो जाता है. आई फॉरगेट एवरीथिंग. As I stepped into this institution as the new principal, I was entrusted with a responsibility that goes more than the administration. I very clearly remember when after all rounds of interviews were over, ma'am called me in her office and she handed me the offer letter. She said, Vivek, this is not just an institution that I hand over to you. It's my child that I have nurtured throughout with love and care. That speaks a lot about this institution, how it is cared for, how it is built, how it is shaped. And I am committed to prove every expectations of this institution true to its words. Hey, Sarah, Sarah, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Hey, Sarah, Sarah, what will be, will be. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be?